Hello students, welcome to CrackGradeB online learning platform. So today we have a special guest with us, Miss Shraddha Pandey. She has cracked RBI Grade B 2023 exam in her first attempt. So many congratulations first of all, Shraddha. And I would like to introduce herself. She has completed her master in commerce in 2022 only, and it was her first attempt. So we will know her journey, that how she prepared for this exam. So Shraddha, from first phase to second phase and interview, step by step, you can share your strategy with our followers. Sir, for the phase one, I would say that I had already appeared for IBPS PO mains. So like I already had practice of quant reasoning and English. So I was very well versed with the syllabus, and that is why I did not face any problem over there. And for coming on to the phase two part, and for that purpose I had purchased the crack grade B course, and I did multiple revisions of that, and because I already have a commerce background, so that also helped me somewhere, and that is how like I proceeded with my journey. So from when you started your preparation for 23 exam? Sir, in the February month only, I heard that there is some exam called RBI Grade B. I was not aware about it initially, but there was news in the market that notification will be out soon. So I saw the syllabus, and I thought that yes, it is doable. So I started my preparations from that day itself. Okay, okay. So from Fab itself, you started your preparation. So we have seen that from since 3 to 4 years, the level of the exam, specifically quant reasoning, has increased. सो और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं क्वांट में, क्वांट जो आरबीआई का क्वांट है और रीजनिंग है, एज कंपेयर टू आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ, उसको टफ मानते हैं। तो इसको आपने कैसे मैनेज किया, कैसे प्रिपेयर किया, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, या जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं उनको कौन से क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, स्पेसिफिकली रीजनिंग में? सर, पहले तो इट इज लाइक कि जब हम मल्टीपल टाइम्स मॉक्स देंगे, तब हमको ये रियलाइज होगा कि कौन से क्वेश्चंस डुएबल हैं। फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग में मैं जो है हमेशा पहले मिसलेनियस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी, बिकॉज कोडेड सिलॉग्स हो गए या कोडेड इनइक्वालिटीज आ जाती हैं, एंड ब्लड रिलेशंस वगैरह, और क्रिटिकल रीजनिंग, ये पहला मेरा चॉइस रहता था कि मैं इसे हमेशा पहले ही अटेम्प्ट करूँ। सो आई यूज टू अटेम्प्ट देम फर्स्ट, then afterwards I used to switch on to a puzzle part, and puzzle maybe I used to choose that puzzle which is very easy and that I will be able to do. That is how I did, and I practiced this throughout the mocks, and even in the exam also it helped. तो एग्जाम में भी आपने मिसलेनियस क्वेश्चंस को ही टारगेट किया, जो पजल्स सिटिंग अरेंजमेंट है उनको लास्ट में? Yes sir. ओके, ओके। एंड क्वांट, क्योंकि क्वांट भी सेक्शनल कट ऑफ बहुत कम है और स्टूडेंट्स इसको कैट लेवल का मानते हैं, तो इस पे आपका क्या व्यू है कि ये एक्चुअल में क्वांट जो है वो कैट लेवल का है, या आईबीपीएस पीओ के कंपैरिजन में है, या उससे इजी है? सर, कुछ तरीके से तो IBPS PO मेंस के लेवल का ही है कौन, एंड उसमें अगर इट इज लाइक मिसलेनियस पार्ट अगेन अगर हम टारगेट करते हैं तो दैट विल बी डूएबल, because there are certain portions like quadratic equation है, and then there are questions on algebra also that are easy, number series है. So that thing, if we try and do first, then that is manageable, and there are also some chapters on arithmetic जो काफी easy हैं, doable हैं. So if we target chapters like ages, then profit and loss है, CISI, ये सब easy हैं. So we can choose chapters that you find easy and attempt those questions on. और एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो एक अलग स्ट्रेस रहता है कि क्लियर होगा कि नहीं होगा, एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो वो आपने टाइम मैनेजमेंट और ये सब चीजें भी देखनी होती है पेपर अटेम्प्ट करते हुए, तो कैसे मैनेज किया इस प्रेशर को? सर, पहले तो इट इज लाइक जब भी मैं एग्जाम देने जाती थी, आई यूज टू लाइक
टेक आउट ऑल द नेगेटिव एनर्जीज। मैं ये सोचती ही नहीं थी कि क्लियर होगा या नहीं होगा, जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ एंड स्टार्ट। मैं ऐसे ही अटेम्प्ट करती थी। एंड स्पेशली इफ यू हैव गिवन मल्टीपल मॉक्स, देन यू विल नॉट फाइंड द प्रेशर दैट मच। सो द की इज कीप प्रैक्टिसिंग मॉक्स। करंट अफेयर की बात करते हैं हम, जनरल अवेयरनेस की, तो 80 मार्क्स का आता है आरपीआई में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ओवरऑल कट ऑफ में हेल्प करता है। तो उसका भी पैटर्न लास्ट 2-3 ईयर से चेंज हो गया है। क्वेश्चंस जो जनरल, जो रेफरेंस से पॉपुलर सोर्सेज हैं वहां से नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए आपने क्या सोर्स, क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स? सर करंट अफेयर्स के लिए मैं मेरे फेज 1 में मैंने जैसे बताया, मैंने कोर्स परचेज नहीं किया था। तो मैं मेरे पुराने मेथड से मैं अफेयर्स क्लाउड ही रेफर कर रही थी। बट ऐसा उसमें से भी मैं काफी सिलेक्टिव थी, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज रीडिंग न्यूज़पेपर्स एज वेल। तो with that I used to have an idea that yes, BFSI part is very important. So I used to make sure कि मैं जो BFSI के न्यूज हैं that I don't miss out. एंड उस टाइम पे आप भी चैनल में, टेलीग्राम चैनल में कुछ क्वेश्चंस लेके आते रहते, तो मैं वो भी देख लेती। आई रिमेम्बर कि एक आपने कुछ रिपोर्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लाए थे 4-5, और वो एग्जाम में आए थे डायरेक्टली। ओके। और कितने मंथ्स का करंट अफेयर स्टडी किया था, या मतलब जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं उनको भी कितने मंथ का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए आरबीआई ग्रेड एग्जाम के लिए? सर आई फील कि लास्ट 4 मंथ्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगेन, जैसे कि बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ स्कीम्स ओवर देयर। सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी डोंट मिस आउट ऑन टू दीज न्यू स्कीम्स, बिकॉज आगे चल के यही स्कीम्स आते रहते हैं एंड दे देन क्रिएट अ प्रॉब्लम इन फेज 2 इफ यू डोंट डू देम। ओके। तो एग्जाम अपीयर होने के बाद, फेज 1 के बाद, हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू विल बी एबल टू क्लियर, और यू आर नॉट कॉन्फिडेंट दैट you will not be able to clear this exam? Sir, I was confident that I'll clear this exam, because when I came and I saw the reviews, I was seeing how other aspirants have found the exam. Then they found that the exam was hard and all, but मैंने ठीक ठाक अटेम्प्ट किए थे। सो आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशंस फॉर फेज 2। उसके उसके डायरेक्ट जैसे आने के बाद ही मैंने स्टार्ट कर दिया। You scored in phase 1? हाँ सर, फेज 1 खत्म होते ही मैंने शुरू कर दिया, रिजल्ट How के much, आने से पहले। how much score, how much marks you scored in phase 1? Sir, I got 65 point something. Okay, that is a good score. Yeah, now comes to the phase 2 part. So, what were the major shows, and how did you prepare? First, we will discuss about ESI, economic and social issue. There is static part, there is schemes, there are reports and descriptive also. So, you focused more on static part, or you focused more on PIB and the schemes and reports, the current part? Sir, especially the ESI part, that was somewhere I was very much nervous, especially because schemes इतने ज़्यादा हो जाते हैं that it becomes very bulky, and that too we have to remember the figures, numbers, and it creates hell lot of confusion. And especially इतने सारे dates होते हैं कब scheme कब launch हुई है, that also creates a problem. So I had made up my mind कि मैं कुछ important ministries हैं, only that I'm going to cover and the rest I will skip. That was my plan, and that is the only thing that I did. And जो आपने बताया था, these are certain important ministries that you should do, that I had prepared. And उसके बाद मैंने मेरा ज्यादा फोकस मैंने डिस्क्रिप्टिव पे रखा। That was my major area of focus. And especially because I was reading newspapers, so that also helped me, because कोई article अगर multiple times it is repeating in multiple newspapers, then I used to get an idea that this is an important article. So I used to screenshot those articles, and I used to keep it, save it, and later on I used to refer it. And likewise, I say because of that I had developed a different style of writing as well.
क्योंकि मैं उन्हीं के स्टाइल्स कॉपी करती थी, द वे दोज राइटर्स प्रेजेंट देयर व्यूज, that way I also wrote in the exam, and I think that has helped. So which newspaper you were following? What, sir? Which newspaper you were following? Sir, I was following two newspapers, Business Line and Business Standard. These were two things that I used to read. Okay. And about the descriptive typing, so you were able to manage the time, and were you able to reach to the word limit? Word limit reach हो गई थी पेपर में 600 words 15 marks वाले क्वेश्चन में और 400 10 marks वाले में? No, sir, that was not reachable because maximum मैंने try किया that I'll write around 500 to 525 words. So mostly इतना ही तक हो पा रहा था मुझसे. And I focused more on writing content nice instead of just increasing the words. Okay. And phase 2 के लिए भी ESI के लिए स्पेसिफिकली कितने मंथ का करंट अफेयर रहना है? जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि पीआईबी उन्हें खुद से पढ़ना चाहिए, पीआईबी वेबसाइट, और काफी सारे स्टूडेंट मतलब जो 7-8 मंथ्स का भी करंट अफेयर पढ़ने लग जाते हैं, तो इज इट एडवाइजेबल और ईएसआई के स्टैटिक पार्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? Sir, I don't believe the static part should be focused much. But if you are somebody who is not having a commerce background, then I think you'll have to like have an idea at least about some static portions as well. But if you are regularly in touch of newspaper, then you will get an idea कि ये सब क्या है. And for the PIB, sir, it is like I preferred mostly from the date of notification. मैंने वहीं से रीड करना स्टार्ट किया. Okay. So and what about the practice? Did you do a regular practice for this descriptive writing? Yes, sir. Sir, what I used to do is कि like suppose I read some article today in the newspaper, and फिर उसको मैं अपने words में I used to rephrase it. I used to type it every day. Result आने के बाद I used to type it. And I used to note down even time as well. कि how much time did I take to type? And then later on I used to find out what are the mistakes that I have done, and I used to highlight those mistakes so that the next time I type, this mistake don't happen. So descriptive, sorry, phase 2 you started only after the result, or from February itself you were preparing for phase 2 as well? Yes, sir, from the February only I was preparing phase 2. I did not like split it, otherwise it would have been become difficult. I covered the static portions first. Okay. Now go to the management and finance part. So you were from commerce background, so most of the things will be similar. Then what was the strategy for this finance and management? Sir, firstly, this was the most easiest portion that I found, and especially the finance part, because I saw the previous trends of the questions that were coming, and I realized that questions are not coming mostly from the static part. Anyways, I had read the static portion as well, but I thought that 1, 2, 3 readings will be enough. So maximum I read them twice, and otherwise I focused more on the current portions only in the finance part. And management again, it is like you have to have some idea that certain topics are important, like motivation chapter है, leadership है, ethics है, and उस time पे corporate governance and ethics का बहुत issue भी चल रहा था. So I had that idea that this is important, and मैंने वो अच्छे से किया था. And exam में exactly ethics वाला एक question आया था. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे मान लो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में है, बहुत सारे जगह पे कंटेंट वो मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म का कंटेंट देखते हैं, तो हमसे क्वेश्चंस करते हैं कि ये कंटेंट इतना कंटेंट एनफ है, तो आपने एग्जाम लिया है, हमारा कंटेंट भी देखा है, तो आपके अकॉर्डिंग कंटेंट एनफ था या और डेप्थ में स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए? सर आई थिंक जो आपका कंटेंट है वो काफी मतलब इनफ है, दैट इज इनफ. इट इज नॉट टू बल्की टू रीड, एंड इट इज नॉट इवन टू लेस.
if somebody is reading it at least 3 times, I think it should be read, so that you have an idea about how to approach to a question. And आपके जो model answer writing forms होते हैं, with that also you have to like find out some points, तो वो easy रहते हैं. So, and in finance management also, you follow the same strategy in the descriptive writing or something different strategy you followed? How did you write the answer in the final exam in descriptive paper? It was point-wise format or some combination of the data plus government initiatives. How did you write? Sir, my answer was, first I used to write the introduction. Mhm. And second, on the body part, I used to focus on the point-wise format with some data as well. And conclusion mein, it used to be regarding the way forward and or the challenges that is there. And if suppose some question is about the regarding the advantages and all, then I used to highlight that these are the challenges we are having. These are the government initiatives. Schemes also I used to highlight. And one different thing that I used to follow is that I had, while reading the newspapers, I had read some quotes and all, like those authors used to use. So I used to quote those writings also in my answer. So I think that made my answer look very different from others. You have to be different because competition is very tough. Almost brilliant minds, all are brilliant minds who are appearing in this exam. So you have to be different from others to get more score. Okay. Yes, sir. Mhm. And in ESI specifically, schemes, lot of data, a number of schemes. How to cram those schemes? Any specific strategy you will advise to the student? Because every time, every year, we are getting this question that how to cram the schemes. Any way, any strategy. Sir, I think the only way is that you have to revise it multiple times on. That is the only thing that works. Otherwise, it is like not next to impossible to memorize all the facts. So if you keep on revising it multiple times, then it will work. And what I used to do is I used to take a weekly revision. Like मैंने आज ये सारी schemes पढ़ी हैं. Then एक week के बाद I used to test myself कि ये सब मुझे याद है या नहीं. What are the things I'm missing? Then again I used to read that. This is how I kept on revising. Okay. एंड इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते रहते हैं कि हमें रेफरेंस मतलब काफी सारे स्टूडेंट क्या है कि मिनिस्ट्री की वेबसाइट फॉलो करने लग जाते हैं स्कीम्स की रेफरेंस वेबसाइट तो वो एडवाइजेबल है डिड यू फॉलो दैट और यू जस्ट यू रिलाइड ऑन द व्हाट वी वर प्रोवाइडिंग No sir, I did not follow those strategies because फिर बहुत time waste हो जाता है and you will not be able to focus on what is important. I used to read from the PDFs only and जो आप regular MCQs देते थे top 100 MCQs on schemes and all मैं वही read करती. okay and in descriptive writing also while we are attempting the question in the exam specifically. So every candidate is not able to recall or not able to think in a fast manner that what they have to write. So Yes. like that, some students used to write on the paper. They will make some rough points and then they will type. So what was your strategy? You directly type on the computer with the help of keyboard in the exam, or first you make a draft, means rough idea that what you are going to write in the paper? Sir, I used to make a rough draft first. Like I used to note down the keywords or the key points that I will be adding in my answer. Because this used to help me so that I don't forget. Otherwise हम writing में इतना busy हो जाते हैं that we forget कि हम आगे क्या लिखने वाले. So इसे avoid करने के लिए I used to make points and then I used to type. And even if you are typing directly also, then also there will be problem because वो system ऐसा होता है that erasing back the answer that you previously wrote फिर वो बहुत problematic होता है. So it is better that you jot down the points first. स्पेसिफिकली हम अगर उसकी बात करें तो
डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में ही, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स है उनके लिए आपका कोई स्पेसिफिक एडवाइस कि उनको इस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए या इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए टू स्कोर गुड मार्क्स? Sir, first thing is that they should be well-read person. That I would suggest, because uske bina you will not be able to have an idea that what is trending in the BFSI market and all. Because most of the times it is seen कि exams में उसी के related questions आते हैं. So if you read, if you're read person, then you will be able to like manage. You will have some idea. And second is that focus on how you can present your answer differently. That will also help you. Write some examples, like write events that are happening in the current. That will help. जैसे कि एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे क्वेश्चन था, देन उस टाइम पे बायजूस का एक इश्यू बहुत ट्रेंडिंग चल रहा था मार्केट. सो आई wrote that answer regarding Byju's, connect करके मैंने वो लिखा था startups के issue में. Then I think that will somehow make you stand out. For finance also एक मेजर मतलब मेजर जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं उनका एक क्वेश्चन रहता है कि आरबीआई वेबसाइट से उन्हें सर्कुलर्स पढ़ने चाहिए, आरबीआई सर्कुलर फॉलो करना चाहिए, तो इस पे व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? Sir, it is like if somebody is trying to read directly from the website, it is like not problematic, but the thing is the language is somewhat difficult. I find it. So it is better that you read from your sources, whichever you're following. तो मैं तो सर आपके ही जो आप सेंड करते थे उसी में से ही मैं रीड करती थी सारे. एंड ऑल्सो कि आपने लिस्ट ऑफ स्कीम्स बनाई थी और उसके भी क्वेश्चंस होते थे, तो वहां से भी टॉप 100 क्वेश्चंस ऑन आरबीआई फंक्शंस, ये सारे सब मैंने ये सब किया था. So the English descriptive. So what specific thing, specific strategy you followed for English descriptive, or it was similar to your ESI and finance preparation? Sir, it was similar to ESI and finance only. And I would also like, I had there was a question, I think comprehension was asked on the greed inflation. So ये सेम आर्टिकल मैंने बिजनेस लाइन में मैंने पढ़ा हुआ था, like एक बार मैंने पढ़ा हुआ था. And when I saw the question, I found like, oh my god, this is very easy, it is going to be easy because I have already read this. और ये unseen comprehension है, but fortunately मेरे लिए ये seen comprehension बन गया. So if you are like regularly in touch of what is happening, then this will help you. And English में भी I used to make sure that ये कम words हैं तो चलेगा, no problem. But spelling mistakes and grammar errors वो नहीं होने चाहिए. That I made sure. Okay. And after the phase 2 exams, when you finished your exam, so how much you were confident? Sir, after phase 2, I was not very much confident कि कैसा होगा. And I was also not sure कि मेरा पेपर कैसा गया है, because the questions this time that came वो directly reports से आए हुए थे. And it is like so काफी surprising था कि कैसा होगा. But when the results came, I was quite surprised कि अच्छा ही positive result आया है. And I was very happy. And उसके next day से ही मैंने interview के preparations करना start कर दी. एक और होता है जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो एक ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि काफी अपने अपने जो शोज होते हैं उनका कंटेंट शेयरिंग भी चल रहा होता है, या तो उसमें भी कई बार माइंड में आता है कि मेरा ये कंटेंट रह गया है, मुझे मैंने ये नहीं पढ़ा है, और बाकी स्टूडेंट्स ने ज्यादा कंटेंट पढ़ लिया है या मल्टीपल टाइम रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत पहले से भी काफी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक माइंड में स्ट्रेस आ जाता है, मतलब फियर ऑफ फेलियर. उस स्ट्रेस को ऐसी चीजों से कैसे डिस्ट्रैक्ट, मतलब किस तरह से डिस्ट्रैक्ट ना हो स्टूडेंट्स, या आपने कोई स्ट्रेटजी फॉलो की कि ऐसी चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मुझे इस चीज पे फोकस करना है, यही मेरी जो स्ट्रेटजी है मुझे फॉलो करनी है?
सर पहली बात तो ये कि इट इज लाइक आप जो भी रीड कर रहे हैं उस पे यू शुड हैव फुल कॉन्फिडेंस दैट व्हाटएवर आई एम डूइंग, व्हाटएवर स्ट्रेटजी आई एम फॉलोइंग इज गुड. एंड सेकेंड थिंग इज कि आप जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हैं यू शुड ट्रस्ट दैट सोर्स. And the key is you revise it multiple times. You should not be misguided what others are doing. And for me, if I would talk about, then I was not even like seeing what other people are doing. I was only focused on कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है. I'll be writing this way. I will not be writing that way. Some people are writing this like this. They are writing in para wise. पर मुझे point wise ही लिखना है. That I was like sticking to my plans on, and that did work. Okay. And what was your interview experience and how did you prepare for that? Sir, for the interview, when I gave the first mock interview, that time I was not very well prepared because directly results आए थे, and on the 7th only I gave my first mock. That was the time I realized कि this it will not work this way. I'll have to like practice a lot. So I started recording myself every day. I used to sit in front of the camera, turn it on and record, and speak on around for 30 minutes for whichever topic that I have read in the newspaper. Likewise, I started practicing. उसके बाद मैंने अपने लाइक बैकग्राउंड के ऊपर जो भी मैंने मेंशन किया था सब कुछ मैंने अपने बायोडेटा में उसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चंस बनाए थे. लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम माई क्लास 11th 12th, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी सब कुछ पढ़ा था सारे सभी सब्जेक्ट्स के व्हाट पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं प्रीवियस ईयर के ट्रांसक्रिप्ट्स देख के ये सब मैंने क्वेश्चंस बनाए. एंड आई यूज्ड टू रिवाइज देम एवरी, और एवरी डे का मेरा ये रूटीन फिक्स था दैट इन द इवनिंग आई विल बी रिकॉर्डिंग माई सेल्फ. ओके. तो और बोर्ड के साथ क्या एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का? Sir, there the experience was very different from the mock interviews. So as in when I entered, it is like I was the third person to go in, and that was the time when they were having breakfast. So it was like quite uncomfortable situation, but I think I managed it well. And उसके बाद directly sir ने chairman sir he started asking questions, and later on there was a point when there was one question sir ने पूछा था मुझसे कि suppose तुम एक ओनर हो एंड तुमको एक बिजनेस स्टार्ट करना है पीयर टू पीयर लेंडिंग का, तो तुम कैसे स्टार्ट करोगे? दिस वाज द क्वेश्चन दैट वाज टोटली आउट ऑफ द बॉक्स, एंड जिसका मुझे कोई लिटरली आइडिया नहीं था. But then sir wanted to know answer. He pushed me to answer, and then I somehow managed it. Okay, okay. Did you have question that why RBI? No, sir. There was no HR questions asked to me. Directly, जैसे ही मैं गई सारे questions मेरे background के ऊपर ही थे. I was thinking that they'll ask some HR questions and all, but they did not. They did not ask any questions. Okay, okay. And one more question I generally ask to every our subscriber. There is aggressive marketing in this competitive market, exam market. Then how did you choose? How did you select that you should go for the CrackGradeB? सर स्पेशली बिकॉज मैंने आपका फेज 1 के टाइम पे मैंने आपका कंटेंट देखा था जो आप फ्री में पीडीएफ देते थे करंट अफेयर्स के लिए, तो मैंने उसको देखा था एंड उसमें से एग्जैक्टली 5 क्वेश्चंस आए थे. मैंने ये नोटिस किया था, उसको जस्ट मैंने एक दिन पहले ही पढ़ा था, एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले. एंड और वो मुझे 5 क्वेश्चन याद थे और वो ही आए थे. एंड मैंने ये भी नोटिस किया था क्योंकि मैं मल्टीपल सोर्सेज को तब फॉलो करती थी फेज 1 के टाइम पे क्योंकि मेरे पास कोई सोर्स नहीं था. और उसके बाद फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि दो मैंने 9 आवर्स के मैराथन अटेंड किए पर उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया. एंड ये जस्ट एक दिन पहले आई सॉ एंड इतने सारे क्वेश्चंस आ गए इसमें से. सो आई थॉट दैट आई शुड गो फॉर दिस and I went, and also because the course is very affordable. That is also one of the reasons. Okay. And what will be your message or advice to the future aspirant?
Sir, I would say them that believe in yourself and start working from the day one. You should be having that same level of energy till the last, until you clear the exam. And that is how it is going to work. And do not hesitate to go something extra, because I have, despite having a commerce background, I went on to do a lot many things extra, because मैं पैनल डिस्कशंस भी देखती थी, I read multiple books, मैंने 6-7 गवर्नर्स के बुक्स भी रीड किए हैं, and if you keep on doing that way, then you will definitely succeed. Okay, so thank you, Shraddha, for joining this session, and it will definitely clear many doubts of the future aspirants. And I wish you good luck for your future journey. And congratulations and thank you. Thank you, sir.